अच्छा, सो ओके, सो फॉर द सेम बिल्डिंग, जिसको हम लोगों ने कहा कि यार ये जनरली ये स्टडी स्टेट में होती है, राइट? सो फॉर द सेम बिल्डिंग हाउ कैन, अब इसी बिल्डिंग को हम लोगों ने ट्रांजिएंट में किस तरह से हम लोग लेंगे? सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर डूइंग एन अर्थक्वेक एनालिसिस, अ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, लेकिन उसके अंदर हम लोग अगर अर्थक्वेक एनालिसिस कर रहे हैं इन विच द लोड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो इफ द लोड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन वी आर सपोज टू डू अ transient analysis of the same building, right? So now you can see that the problem is the same. We have to design a building, but for normal load conditions we are going to assume that it is steady state. But if we are going to do any sort of analysis for the earthquake for the same building, so then we are going to assume that we have to do a transient analysis, so the load is changing with respect to the time. ठीक है जी, अभी इसकी कुछ समझ में आई उमर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपके 3 नए लड़के आए हैं जिनको नहीं पता कि हम लोग इधर क्या बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। यस सर। उमर, इसको जरा जो हमने भी डिस्कस किया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आराम से, कि जो लड़के नए आए हैं उनको समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त एग्जांपल दिए, एक्सट्रीमली अप्लाइड एग्जांपल। इसी तरह की एग्जांपल, इसी तरह की चीजें चाहिए। सो व्हेनेवर यू ओपन अ शावर, सर्दियों में जब भी हम लोग इसको खोलते हैं, ठीक है, तो पानी ठंडा होता है, और फिर जब वो पानी ऐसा ऐसा मिक्स होता है, तो वो जितना ये ड्यूरेशन होता है व्हेन इट इज ट्राइंग टू रीच इट्स स्टेडी स्टेट, ठीक है, वो सारा का सारा अगर हमने if we want to do an analysis of that, then we have to do a transient analysis. But once it has reached that particular condition, if we want to do an analysis after that, then it is a steady state analysis. ठीक हो गया? अच्छा, okay, Yasin Khan sahab, give me an example of steady state and transient, please. Okay, so most of you giving me examples of computational fluid dynamics rather than like steady state और transient के हिसाब से तो आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने कहा और जो हमजा ने clear कर रहे हैं with respect to the steady state and the transient analysis, but most of you have been giving me examples of the fluid rather than the finite element analysis. सही है? तो सर गाड़ी का गियर मैकेनिज्म जो है वो भी ट्रांजिएंट एनालिसिस में आता है। गाड़ी का गियर मैकेनिज्म बिल्कुल ट्रांजिएंट एनालिसिस में आता है, बिल्कुल ट्रांजिएंट एनालिसिस। सही। Acha, okay, let me give you an example. So for example, now all of you would be sitting at your houses, at your homes, right? So sorry, so when you're sitting at your home, you can see that your furniture is placed somewhere, it's not moving. ठीक हो गया? Okay, and you would be sitting somewhere as well. Maybe you might change your position a bit, but you're not changing that much, right? So if you want to do a finite element analysis of the building you're sitting in, you will do a steady state analysis. Why? Because the load and the boundary condition and the geometry is not changing with respect to the time. ठीक है, टाइम के साथ ना लोड कंडीशन चेंज हो रही है, ना ज्योमेट्री चेंज हो रही है। सही हो गया? सो नथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, राइट? सो यू विल डू अ स्टेडी स्टेट एनालिसिस. Okay, okay, so but still if you are say doing analysis of the same building, but for an earthquake analysis, ठीक है, आप उसको अगर earthquake के लिए कर रहे हो, then the load is changing with respect to the time. उसी building का load जो है with respect to time change हो रहा है. So then what are you supposed to do? You're supposed to do a transient analysis.